Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good today. Well, आप लोगों ने already title पढ़ के तो पता कर लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है. So that is correct. Today I am sharing what's in my bag. So everything that I keep in my bag वो मैं आपसे share करूँगी. Now this is a mini version जिसमें मैं छोटे बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ वो दिखाऊँगी. And then I'm also going to be filming a bigger version जो कि बड़े bags होते हैं, like बड़े वाले हमारे tote bags होते हैं, उसका भी कि what's in my bag उसका भी मैं वर्जन अलग से शूट करूँगी. So without wasting the time, let's get started and let me show you guys what's in my bag. सो टुडे ये मेरा बैग है. मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इस बैग में मेरे क्या क्या होता है. मैं ये बैग हर जगह कैरी नहीं करती हूँ, बट इसके अंदर जो सामान होता है वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं हर जगह कैरी करूँ. सो फॉर टुडे आई विल बी शोइंग यू गाइस कि इस बैग के अंदर क्या क्या है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो आई एम जस्ट गोना अनजिप इट एंड I don't know if you guys can see it or not. There's like a lot of stuff here. A lot actually. So alright, let's get started. So first thing come first, here are my car keys, obviously. Now you guys would be noticing कि यहाँ पे इतने सारे key rings क्या कर रहे हैं car keys के साथ. So there's like a back story behind it. So जितने भी key rings हैं इसमें they mean something to me. ये मुझे किसी ना किसी ने दिए हैं. So I never ask for key rings, but अगर कोई मुझे key rings देता है so I definitely keep it as a memory. Now कोई in the sense ऐसा नहीं कि कोई stranger मुझे आके दे देगा तो I'll put it on. No, I'm talking about my family. I'm talking about my close friends or my best friends or anyone from my family who are close to me. So अगर वो लोग बिना मेरे मांगे मुझे key rings देते हैं so I just put them on. और इसमें से कुछ तो बहुत पुराने भी हैं. Like this one is from college days. This is I got like recently मेरे friend ने मुझे दिया. This one also recently, and there are others as well like this. हम detail में अभी नहीं घुसेंगे. Maybe I'll make a separate video about this. But first come first, my car keys. Now second thing, of course, if you're going out you need a wallet, right? So इसमें मेरे सारे I have money, I have cards, मेरे ID cards, everything सब इस चीज़ के बीच में है. So ये तो मैं कभी भूल भी नहीं सकती. So this I definitely have to carry wherever I'm going, and that's why I've मैंने इसलिए एक separate सा अपना एक wallet बनाया हुआ है छोटू सा, जो कहीं भी fit in हो जाए. अगर मैं छोटा बैग लेके जा रही हूँ तो उसमें भी fit in हो जाए, बड़ा बैग लेके जा रही हूँ तो उसमें भी fit in हो जाए. So it's like very easy to carry. If I don't want to carry anything, I just hold it like this and I can go. So it's very nice and it has like everything. Now third thing which comes is of course my AirPods. I like to carry them everywhere I'm going, just in case I want to listen to a music or something. So I like to carry them, but make sure you guys charge them. So I always make sure that I charge them before taking them out. उसके बाद एक क्यूट सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. दैट इज़ अ मिरर. यूजुअली पीपल डोंट लाइक टू कैरी अ मिरर अ लॉट, बट आई समटाइम्स आई कीप इट इन माई बैग एंड समटाइम्स आई डोंट. सो दिस इज़ दिस क्यूट लिटिल मिरर विच आई लाइक टू कैरी, विच लुक्स लाइक दिस. इट हैज़ लाइक अ मिरर ऑन दिस साइड एंड आई कैन put a pad or something somewhere here, like just in case मुझे अपने फेस पे टचअप करना है कुछ, बट मैं यूजुअली यहाँ नहीं रखती. और इस साइड इसके आप देख सकते हो इधर की तरफ मिरर है. ना इसको भी मिरर बनाने का एक स्टोरी है. आई थिंक एक ब्रांड ने मुझे जो हमारे एक्ने पैचेस होते हैं ना वो दिए थे, तो वो इसके अंदर आए थे. वो ख़त्म हो गए तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती थी. सो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एज माई मिरर. क्विकली आई जस्ट वांट टू टच अप. और फ़ोन में इतने अच्छे से समटाइम्स यू डोंट सी द पोर्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग. सो जस्ट क्विकली लुक इनटू इट. सो सिंस देन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एज माई मिरर एंड आई जस्ट लव दिस. Just see how cute this one is. Now very important thing, if you're going out, this should always be in your bag, is a sanitizer. So I love using this sanitizer. It is a Touchland Power Mist sanitizer. Now this is not in like a the jelly form. This is like a spray. So कुछ इस तरीके से, and then you can just rub it. And it also has a good thing, like आप किसी टेबल पे बैठ रहे हो, if you're eating outside, you can just quickly spray it. तो वहाँ पे भी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं in your surroundings as well. So that's why I like using this one. और ये आपको हर जगह मिलेगा, मेरी गाड़ी में, मेरे हर बैग में, मेरे ऑफिस के बैग में, मेरा जो पर्सनल बैग है, मेरा शोल्डर बैग है, उसमें like everywhere you'll get this. So I like using this a lot rather than that gel sanitizers. वो भी अच्छे होते हैं, but this one's like my personal favorite.
Another thing which I like to carry is this, you know, it's like a little, you know, hairpin, hairband और you know आपके safety pins का एक box है. अभी इसमें ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने काफ़ी निकाल के यूज़ भी कर लिया है. तो just in case you're in a situation कि एकदम से you know आपको safety pin चाहिए, so I always carry it ताकि मैं निकाल के यूज़ कर लूँ. just in case someone else need it तो मैं उनको दे सकती हूँ. आपने बाल खोले हुए हैं, आपको बाल बांधने हैं, हर टाइम हम हमेशा यूजली हम लोग को आदत होती है यहाँ पे कैरी करने की रबर बैंड, बट समटाइम्स यू फॉरगेट, तो इसलिए मैं अपने पास एक्स्ट्रा रखती हूँ. बॉबी पिन्स एज वेल, बाहर हवा में हो यार, यू नीड टू you know just pin them up, so definitely you know I just use these. I always like to keep them with me. Now, few things also I like to carry is this Benefit tint, which is from Benefit Cosmetics. This is very natural. You know, if there are days when I have not applied any makeup, so I can just quickly, you know, apply it on my face just like this. अभी मेरे face पे थोड़ा सा makeup है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे apply करके, you know, ऐसे easily blend in कर सकती हूँ. और आपको कोई, you know, beauty blender, brush की ज़रूरत नहीं है. You just like apply it like this, and you know, it just gives you a kind of like a blush, you know, effect. And ये use भी इसलिए होता है. It's very natural. You can use it on your lips, you can use it on your cheeks, you can also use it on your eyelids as well अगर आपको थोड़ा सा color चाहिए वहाँ पे. So I like to carry this everywhere with me, you know, just for the days whenever I don't like to apply a lipstick or something and I want to add a little blush. So this is like a very natural thing which I like to carry. Then of course I have like few lipsticks and a lip balm which I always keep it. Now lipsticks keep on changing, but lip balm हमेशा मेरे bag में रहता है. Like let's say अगर मैंने अभी ये lipstick लगाई है, this one, so this will definitely go in my bag. Then this is another extra lipstick which I keep, you know, which is a natural color. और फिर उसके बाद मेरा lip balm. So definitely few lipsticks and lip balm. फिर टू यू नो सेट माई मेकअप, समटाइम्स हमको थोड़ा सा यू नो टचअप करना होता है, तो मैं साथ में अपना ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी साथ में रखती हूँ. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ लाइक यू नो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ ये स्पॉन्ज काइंड ऑफ अ थिंग भी आता है. एंड इसको मैं ईजिली यू नो आई कैन यूज़ इट एंड आई कैन जस्ट यू नो जस्ट टच अप जस्ट लाइक दिस. गुड टू गो राइट. और ये आराम से इसके अंदर फिट इन भी हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा ब्यूटी ब्लेंडर भी कैरी करने का ज़रूरत नहीं है. सो आई लाइक यूजिंग फिट मी. आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो, मिनी वर्जन्स भी आते हैं, बट आई लाइक दिस वन अ लॉट. And then of course I have a mini version of, like not mini version of, but a mini comb just to you know quickly comb my hair. And then I also have like a makeup remover, you know, one sheet. I always keep it like you know just in case कभी ऐसा होता है. ये मेरे साथ एक बार हुआ था. आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही थी और मुझे एकदम से इरिटेशन होने लगी मेरे आँख पे, यू नो. सो इफ़ यू स्टार्ट रबिंग इट, पानी के साथ कई बार इतना इरिटेशन होता है कि आपको मेकअप हटाने की ज़रूरत है. सो दैट्स वाई आप हमेशा मेकअप रिमूवर तो कैरी नहीं कर सकते हो अपने साथ, या कॉटन या पानी से तो नहीं होता है. सो दैट्स वाई आई लाइक टू यूज़ दिस कि अगर कभी इरिटेशन हो रहा है तो आप क्विकली अपना यू नो मेकअप रिमूव कर सकते हो उस एरिया से, या फिर कुछ भी आपने अगर अपने फेस पे लगाया. सो यू कैन यूज़ दिस. अगर लिपस्टिक चेंज करना है क्विकली, सो यू कैन यूज़ दिस एज वेल. सो कीप जस्ट 2-3 विद यू. आई कीप वन समटाइम्स. अगर लॉन्गर पीरियड के लिए बाहर जा रही हूँ तो मैं 2-3 यू नो ऐसे रख लेती हूँ, बट फॉर लाइक शॉर्टर पीरियड आई जस्ट कीप वन. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल फाइंड माई यू नो ग्लासेस. यार इसके बगैर तो हम कहीं बाहर जा ही नहीं सकते. सो ऑफ कोर्स आई नीड माई ग्लासेस. यूजली मैं इसको बैग में नहीं रखती हूँ. आई ऑलवेज लाइक पुट इट ऑन एंड देन समटाइम्स आई हैंग देम हियर और आई जस्ट यू नो put them here. So I don't keep that you know sunglasses in the bag. So yeah, this is you know technically it. I don't go out without my sunglasses. I need them everywhere I go. Alright you guys, so here completes what's in my bag. So these are all the things I keep in my bag. Now again I'll say sometimes I also keep like a protein bars अपने bag में. अभी मेरा protein bar ख़त्म हो गया तो मैंने bag में नहीं रखा है. Sometimes I also keep you know nuts in my bag, छोटे से box में डाल के, या फिर nuts वाले जो packets आते हैं वो मेरे bag में रहता है, just to you know quickly munch or something अगर मैं drive कर रही हूँ कुछ. So yeah, these are all the things which I keep in my bag. And just let me know. I would also like to know इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या चीज़ आप अपने बैग में रखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ. आई वुड लव टू नो दैट. सम पीपल लाइक कीपिंग चार्जर्स, बट क्योंकि अगर मैं मिनी बैग लेके जा रही हूँ तो मैं चार्जर नहीं कैरी करती हूँ. एक केबल होता है जो मेरी गाड़ी में लगा रहता है, यू नो आई थिंक इट्स USB-C, नो USB to USB-C वाला केबल जो होता है वो, ताकि मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर सकूँ, वो रहता है. सो अगर बड़ा बैग है तो मैं चार्जर भी कैरी करती हूँ, बट अदरवाइज़ मेरे पास केबल ऑलरेडी एक कार
कार में पड़ा रहता है, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बैग में रखने की ज़रूरत नहीं है। सो या हियर कंप्लीट्स अ वीडियो। डू लेट मी नो व्हाट अदर थिंग्स यू कीप इन योर बैग। मुझे बहुत जानने में क्यूरियोसिटी हो रही है कि इसके अलावा और क्या क्या आप लोग अपने बैग में रखते हो। वेल, लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर यू गाइज। आई रियली अप्रिशिएट। एंड इन केस यू गाइज हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो मुझे हर जगह। मेरे सारे सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो। नीचे कमेंट करो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आई विल सी यू गाइस सुपर सून एक नए वीडियो के साथ, बट तब तक टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।